अप्रोच्ड IBM कि भाई हमारा एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है, और वी वांट टू हैव दिस एल्गोरिदम टू सेल, क्या आप परचेस करोगे? तो IBM ने तो भगा दिया था, चल हट, हमको नहीं लेना। Then later on, I don't know from where they got the funding and they started the company. Someone else started the company along with them, and now we see the Google from nowhere to everywhere in today's life. So you think about the Google, what products they have. If you go into the Google suite and you try to check the number of products they are providing us as a free of cost, okay, and those products are free of cost. So probably there are, I guess, 70 to 80 products which we get on a subscription of Google account. Gmail is one of the product, and surprisingly, the Google was giving it as a free of cost, no extra charges, nothing they wanted. They wanted just कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, फुकट में ही ये ले लो. So what marketing strategy they followed? जब 2002, 3, 4 की बात थी तो गूगल का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बाय इनविटेशन ही बनता था. अभी जैसे होता है ना, साइन अप करो, साइन अप करो, साइन अप करो, ऐसे नहीं होता था. ओके, सो दैट वाज अ टाइम वेयर गूगल यूज्ड टू गिव invitation links for your enrollment or subscription of the products. तो उन्होंने वो मार्केट में बना दिया था कि अरे गूगल का मतलब gmail.com का ईमेल आइडिया, मतलब क्या फंटास्टिक आइडिया मिल गया यार तुझे. मैं तो याहू यूज कर रहा हूँ, मैं तो रेडिफ मेल यूज कर रहा हूँ, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन. एंड later on they opened the platform for everyone, once again that too free of cost. And how Google was able to give all those services free of cost, that model, that financial model, marketing model plus financial model, later on came into picture when we started hearing about machine learning. Okay, मशीन लर्निंग तो वैसे तो पुराना ही है, लगभग अभी मशीन लर्निंग को अराउंड 25 to 30 years, 30 years के आसपास हो गए हैं. ओके, दैट इज अ ओल्ड टॉपिक, बट इफ दैट वाज नॉट इफेक्टिव एज कंपेयर टू टुडेज डेट. जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है आपका, ट्यूरिंग वाज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने एक टेस्ट डिजाइन करके रखी थी कि भाई एक मशीन को एआई है कि नहीं है, whether it is capable of doing the automated stuff, and do it have any intelligence. वो ट्यूरिंग टेस्ट उन्होंने डिजाइन किया था somewhere in the 50s, 1950s, 70 years back. Okay, and that test is now playing a role in today's life. So it is a whole journey, not a decades work, but still that those algorithms, machine learning algorithms, gave revenue to Google. Okay, और गूगल की वजह से ही आज फेसबुक है, बिकॉज एट द बैक एंड दे डू यूज देयर सर्विसेज. फेसबुक ने कितना भी बोल दिया कि हमारे एल्गोरिदम है, हमारे एल्गोरिदम है, they need to have the backend support of Google, and so on. So why we are discussing all these things? Because our third unit talks about software products. Okay, so software products है, गूगल के प्रोडक्ट्स एकदम बढ़िया है. उनका प्रोडक्ट बढ़िया क्यों है? बिकॉज वी डोंट फाइंड एनी बग इन टू दैट. ओके, उनको कोई बग नहीं दिखता, वी डोंट फील एनी बगी नेचर इन टू द प्रोडक्ट. एम आई राइट? तो ये सारी चीजें उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट, ओके, गूगल का प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अनदर थिंग कम्स इनटू माइंड कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर? अपना तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कोर हार्डवेयर है. But if you think about the electronic products, they nowadays they merely work without software. You have to write down the program. Okay, we need to write down a program for a controller, for a processor. Okay, for your peak AVR, whatever platform you choose, you need to write down a software for it. And we do have different approaches for the softwares.
So that that is a unit number 3 and its contents are types of software कौन कौन से होते हैं जैसे कि आपको पता है actually but we will give the words for your understanding. So first one is types of software, then waterfall model for software development. We have seen one waterfall model in unit number 2 as well. Okay, that was a hardware product development. Then what different kinds of models we do have for the software, what are different metrics and software limitations. Okay, whenever we say that metrics, when we talk about hardware, necessarily we are talking about the परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. तो हार्डवेयर में क्या आ जाता है कि भाई स्पीड, ओके, देन पावर कंजम्पशन, देन कॉस्ट. ओके, दीज आर द हार्डवेयर मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी स्पीड की बात आती है, हाउ फास्ट और हाउ इफिशिएंट योर सॉफ्टवेयर इज. बाद में उसका फुटप्रिंट, देन व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग टू यूज. ओके, ये प्लेटफॉर्म क्यों, मतलब अगर आपने फॉर्टन में प्रोग्रामिंग किया होगा इन द डेज ऑफ 1980s, फिर फॉर्टन तो उतना क्या कहते हैं उसको, फेमस नहीं है. नो वन डज फॉर्टन प्रोग्रामिंग. ओके, सो प्लेटफॉर्म तो चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर यू डू हैव आफ्टर डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर द यूर प्लेटफॉर्म और नॉट. जैसे डॉट नेट हो गया, वी कैन नॉट रिमूव डॉट नेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. जैसे जावा हो गया, we can, sorry, Java, we cannot remove the Java from the market. Alright? All these are platforms for your software development. Then risk abatement, ये जो word था ना, risk abatement. Abatements means possibilities, I will say. Kind of कि भाई you have to do your analysis of software कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है. Sorry, कौन कौन सी चीजों के बारे में we have to think so that your software won't fail. Okay, what I will say that कि buggy nature of the software. If you go with the dictionary meaning, it says like we want to remove the bugs, we want to remove the non nuisance inside our software. That nuisance might be created due to shared variables, उनके nature की वजह से वगैरह वगैरह. Okay, so we do have buggy nature and failure preventions. Then to handle these things, we have to think about what kind of bugs are there and what sort of testing. So every time we do have some bugs associated with the softwares, we never ever can't get rid of it. We will have those bugs. Okay. So if we do have bugs, we have to handle them. Am I right? And to handle with the bugs and their testing, very important thing, we need to follow a good programming practice. If you are writing down a program which is going to use lots of functions and you are going to write down the pieces of codes for those functions every time, that is not a good. Okay, instead what we do, we create another file where all the functions will be declared and we call that file, and through those calling we execute those functions. Okay, then user interface means what information we seek from the user. जैसे गूगल फोटोज का प्रोडक्ट हो गया. Okay, we are talking about on the larger scale, let it be. So Google Photos, what is the input? Only the photograph. Am I right? What Google wants, only the photograph. This is the user input, or I will say that user interface requires only this information. Put your photo into the folder. Then what Google does? Analyze the photograph. Analysis में क्या क्या है? Object है, then background है, then scene है, what kind of scene this is, then date, location है. Am I right? then into that objects में दो चीजें आ जाती है कि भाई कौन कौन ह्यूमन है,
ह्यूमन के बारे में, फिर कौन कौन से फेस रिकॉग्निशन वगैरह, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग एंड सो ऑन, ऑब्जेक्ट्स अदर की भाई कोई हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ स्टफ है क्या. सो ऑल दीज थिंग्स आर डन एट द बैक एंड. व्हाट यूजर इंटरफेस रिक्वायर्स, सिर्फ हमें फोटो दे दो बस, वी विल डू एवरीथिंग. और फिर एक साल होने के बाद गूगल बोलता है अपने को कि ऑन दिस डेट यू वेयर एट दिस प्लेस, रिजॉय द योर प्रीवियस मेमोरीज वगैरह वगैरह. देन embedded and real-time software. We usually call it as real-time operating system. Okay, software. And we do have MuCOS as one, RTOS. Okay, RTOS is a general term like a operating system. We do have various operating systems. Those are Windows, Mac, and Linux. Linux do have their own variants. In case of embedded system, we call it as real-time operating system. So one example is MuCOS, another example is uh, VM, where याद आ रहा है, but okay ठीक है. Some product from the virtual machine from Oracle, तो वहाँ पे भी आपका operating system आ जाता है. So you do have this kind of operating system which works on actually टाइम क्रिटिकल इश्यूज. यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो जनरल डेस्कटॉप और टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे टाइमिंग इश्यूज आर इंपॉर्टेंट बट आर नॉट क्रिटिकल कि भाई 3 मिली में एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, 4 मिली में रिस्पॉन्स आना ही चाहिए एंड सो ऑन. ओके, एंड इफ वी गो नाउ bit by bit, you know lots of things because we live in a world of software. Okay, so types of software. First one is application software. Performs a specific task. Okay, जैसे ग्राफिक्स को हैंडल करना है, मल्टीमीडिया को हैंडल करना है, देन वेब पेज डिजाइनर है. ओके, देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, पुट्टी. पुट्टी इज अ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, आप मीडिया प्लेयर का एग्जांपल ले सकते हो या फिर VLC का ले सकते हो. All of them are applications. Okay, they are going to perform a specific task. जैसे आपका Microsoft Office हो गया, those are applications. Then what kind of system softwares we do have? The system for softwares are the programs controlling the operation of the computer and devices. Okay, very beautiful example is drivers. Okay, then kernels. Okay, not really kernels, but every operating system do have only one kernel. Okay, this kind of software resides in the memory on the boot up. जैसे ही operating system start होता है, all these system softwares are going to be placed inside the your RAM. Okay, copied from the disk into the memory. आपका RAM है. So पहला था application software, दूसरा था system software. Then inside application softwares, we do have packaged softwares as well. Okay, so these packaged softwares are copyrighted, then mass produced and meets variety of users. Okay, so we can say that uh, the packaged software was Office is an example of packaged software. Okay, then we do have Adobe as a packaged software. Okay, so they do have different kind of functionality into it, but those are importantly copyrighted and those are mass produced and definitely meets variety of users. So Adobe may be used for PDF, may be used for designing. Okay, may be used for security, placing security over the documents, may be used for digital signatures. Adobe may be used for your DRM. DRM stands for Digital Right Manager. Okay. Then we do have next thing as custom software. Okay. These are typically used for specific applications. Okay. कि भाई आपने एक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया.
भाई प्रिंटिंग के लिए ही वो यूज होगा. ओके, it will be used for the printing purpose, then for the maintenance of printer. Okay, and so on. Then we do have shareware. Okay, मतलब क्या? A kind of softwares which will have a trial period and pay later. जब भी आप बात करते हो ना कि भाई फ्री, इट इज अ फ्री, और छोटे से ब्रैकेट में लिखा होता है फॉर 30 days, एंड आफ्टर 30 days इट आस्क फॉर द मनी. भाई मनी दे तो ही मैं ओपन होऊंगा. ओके, काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो व्हाई डू कंपनी प्रोवाइड अस द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स? Because first thing, very important thing, they want to broaden their testing. Whenever we install a shareware in our system, always always a performance log will be sent to the company. जब अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो एक डिस्क्लेमर आता है स्टार्टिंग में जब इंस्टॉल करते हो कि भाई सेंड द परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स एनोनिमसली, काइंड ऑफ स्टफ. ओके, तो परफॉर्मेंस लॉग की तरफ से उनको समझता है कि भाई कुछ बग है क्या, वगैरह है क्या. सेकंड, दे वांट टू क्रिएट सम मार्केट कि लोगों को अगर थोड़ा सा फ्री में दे दिया तो वो यूज टू हो जाते हैं उस सॉफ्टवेयर को, एंड दे स्टार्ट यूजिंग, एंड लेटर ऑन they are ready to pay for the software as well. Okay, then freeware are always free but may not be secure. Okay, those are definitely copyrighted. Whenever we go for the open source market, okay, whenever we go for open source market, so वहां पे भी एक चीज होता है, you can use the code for the software, but if and only if you put few of the lines, जो डेवलपर की लाइंस होती है ना, मतलब कि this software was developed by this team and so that team and something like that. Okay, you have to put that information into your documentation or the source code of your software. Those are always free. Sometimes once again they do have anonymous feedback through performance log. ओके, वो भी परफॉर्मेंस लॉग शेयर करते हैं. एंड आई विल गिव एन एग्जांपल कि भाई देयर वाज अ डाउनलोडर, देयर इज अ डाउनलोडर, इन फैक्ट J downloader. This is a very beautiful downloader. I liked it more than IDM. Okay, IDM, you know, internet, what was that? IDM, Internet Download Manager. Okay, in I am using J downloader since I guess 2009. Okay, yeah. And since those days I am using the J downloader, and in the starting phase of development, वो जो captcha recognition होता है ना, captcha recognition, when you download certain file from the file hosting servers, so you need to put the captcha recognition. ये J downloader में automatically होता था, but later on they removed this captcha recognition even though it was running smoothly. Okay, and they put this captcha recognition into the paid version कि भाई अगर आप हमको डोनेट करोगे कुछ मनी, they are not calling it as a paid version but they are asking for a donation. अगर आप डोनेट करते हो तो we will give you an extra functionality of captcha recognition and so on, different functionalities as well. Okay, so definitely you can try J downloader, which is based on, I guess, Java platform. Okay, so every time you run the J downloader, you will see packages are being extracted and something is happening, and your software is being updated every time. So J downloader is a freeware, and but you cannot access your source code. When we go for the public domain, your source code of the software is not copyrighted. भाई कोई भी use कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. It is always free and you can change your software code. आप change करो, तोड़ो, मरोड़ो, कोई दिक्कत नहीं.
अगर आप चेंज करते हो तो वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर द रॉयल्टी। ओके, तो ये हो गए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बहुत कम सॉफ्टवेयर है, एंड आई हार्डली नो अबाउट द सॉफ्टवेयर विच कम इनटू द पब्लिक डोमेन। बट यस, फ्रीवेयर, shareware, custom softwares, everyone knows about it because everyone uses it at some moment of time. Then we do have another type of software, that is a system software, and that is your operating system. Okay, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या कहना भाई? आपने लास्ट सेमिस्टर एसपॉस में, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो पूरे 3 यूनिट पढ़े हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. सो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग फ्रॉम दोज 3 यूनिट्स which will be in association with the question. Okay, so coordinates all communication between the hardware and devices and resides in the storage device. Okay, fine, fantastic. ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आपका हार्ड डिस्क में होता है, and whenever you boot up your computer, that program comes into your RAM. Okay, so nowadays your operating system is getting heavier and heavier. जब Windows 98 की बात आती थी तो आपकी समथिंग लाइक 256 MB की रैम भी चल जाती थी. ओके, XP में और ज़्यादा बढ़ गया, फिर 7 में, सॉरी बाद में, सॉरी विस्टा में, देन 7 में, देन 8 में, then 10 में. So you gradually have different variations into the operating system. Okay, or you do have increase in demand for your RAM. RAM भी बढ़ रहा है because footprint of the software is getting increased. Footprint जो है वो बढ़ रहा है, size of that particular software. Okay, इन सारी चीजों में कर्नल की साइज नहीं बढ़ रही है. What is increasing? Your application layer and then communication layer as well as GUI. GUI भी बहुत ज़्यादा RAM खा जाता है. So therefore, people switch to Linux whenever they do kind of processing heavy tasks. Okay, so all these were types of softwares. And did you know these examples? आपको पता थे? Yes or no? Akshay, did you know all these softwares exist in these days? Did you know that, Akshay? No, sir. No, sir. हे माहित नव्हतं तुम्हाला की ह्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स असतात म्हणून? नाही. बरं, प्रतीक, तुम्हाला माहित होतं? Yes, sir. ह्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स असतात हे तुम्हाला माहित होतं? नाही, sir. ओके, साहिल, डिड यू नो की ह्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स असतात म्हणून? साहिल, Sahil, are you there? Actually, I was expecting कि हाँ सर, हमें तो ये चीजें पता थी. And just we need to put all those understanding the and already known information into words, types of softwares. ठीक है? So what we had types of software as application software, then system software, and the custom software, shareware, freeware, public domain softwares, and system software का example था operating system. The next point is waterfall model of software development. We are talking about software development. Okay, important है. तो यहाँ पे अगर ये डायग्राम आपको याद रह जाती है कि we start with a concept कि मुझे क्या प्रोडक्ट डिलीवर करना है. Okay, then then we analyze the concept whether it is practically producible or not. I am not saying implementable, I am saying producible. Okay, if I want to produce that particular product, what will be the requirements? Requirements में बहुत सारी चीजें हैं कि भाई मेरे को बैकएंड में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे, लैंग्वेजेस यूज करने पड़ेंगे,
सर्वर्स कौन से लगेंगे एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. देन डिजाइन. ओके, यहाँ पे यू थिंक अबाउट द फ्लो चार्ट्स एंड स्टेट चार्ट्स एंड यूएमएल डायग्राम्स, एवरीथिंग. After doing your all those states charts and UML diagrams, you start with the programming. Okay, प्रोग्रामिंग करते हो, प्लेटफॉर्म तो पहले ही डिसाइड कर लिया है, यू डिफाइंड ऑल द नेसेसरी टास्क्स. ओके, थ्रू द डिजाइनिंग ऑफ योर यूएमएल एंड स्टेट चार्ट्स. प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद फिर टेस्टिंग आ जाता है. ओके, तो टेस्टिंग में अगर बग आता है तो दे विल गो बैक टू प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामर को बोलेंगे यार बग आ रहा है. सो प्रोग्रामर विल से ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छा ये तो होना नहीं चाहिए था, मैंने कल बताया था शायद आपको ये ना, अच्छा ये होना नहीं चाहिए था, अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा आई विल चेक दैट वन. बट मेरे यहाँ पे तो नहीं हुआ था, मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, तेरे यहाँ पे क्यों हो रहा है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रोग्रामर विल गोइंग टू आस्क टू द टेस्टिंग. एंड टेस्टिंग इंजीनियर हमेशा कहेगा मेरे यहाँ पे बग आ रहा है, ऐसे बग आ रहा है, do it whatever you want to do to remove that bug, but next time when I am going to apply some sort of test cases, that bug should not be there. Okay, ये टेस्टिंग हो गया, फिर वेरिफिकेशन करना जरूरी है whether everything is to the mark or not. So we do have alpha and beta releases for the verification, and later on maintenance where we do or company do provide some sort of patches, security patches and everything. So patch releases for the softwares or the operating systems or some sort of real-time operating systems as well. So every time you have to think about the quality of the task you are performing. Okay, concept तो कुछ भी रख के चले जाएंगे आप. So you have to maintain the quality so that user requirement will be facilitated. Okay, तो waterfall model का अगर आपने सही सही ये 8 चीजें लाइन से लिख ली, तो इज इट डिफिकल्ट टू राइट डाउन कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस. यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन द थिंग्स. ओके, और you can write down these explanation on your own understanding. There is hardly requirement कि भाई आपको क्या लिखना है, ये समझ आने की चीज है. ओके, so in between we are going to see few of the technical words which should be part of your answer and understanding as well. Okay, so probably you have drawn this diagram into your notebook, and make sure that you are not making confusion in between the hardware development waterfall model and software development waterfall model. Okay, there those are the two different things, but I would say the different but a similar kind of stuff, because we develop something, we test something, then we maintain something. Same approach for the hardware or software. Okay, so we do have some sort of software models for software development, and one is called as SDLC, that is your software development life cycle. जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था वैसे ही software development life cycle. So we jot down the requirements, we do perform analysis, we do design, we do coding, we do testing, and then deployment. Okay, and so on, so on. Software development life cycle, and we go back to requirement if user asks for any modifications. Okay, so software development life cycle is a well-defined. Okay, there is a well-defined structured sequence of stages in software engineering to develop the intended software product. ये जो SDLC है ना, this is a kind of complete unit for computer engineering students. SDLC. Oh no, I guess that is a complete different subject for them. Software development life cycle, and we have to pick up only few points from the that complete subject. Okay, so what SDLC do have? जो waterfall model देखा ना अभी वही है. Okay, so if you are asked for SDLC software development life cycle या फिर software development model for software development model, so you have to go for waterfall model. और यहाँ पे वही चीजें लिखी है, कॉन्सेप्ट है, एनालिसिस करो, रिक्वायरमेंट जॉट डाउन करो, डिजाइन करो, प्रोग्रामिंग करो, टेस्टिंग करो, वेरिफिकेशन करो एंड मेंटेन करो. Every time we have to assure for the quality.
Okay, if your product don't have any quality, so not really no quality but less quality, then Rediffmail will be overtaken by the Gmail. Let us say Rediffmail will be overtaken by the Yahoo, and this will be overtaken by the Gmail in the market. I am talking about the market scenario. Okay, the I guess 35 years back when the Rediffmail was developed by an Indian engineer, the Rediffmail was purchased by the Microsoft. Okay, then Microsoft came with an new idea कि Rediffmail तो साइड में चलने देते हैं. We will have Outlook, then we will have the mail servers like live.com. वहाँ पे भी we will start with the emailing services and so on. Those are the products. Okay, but in the market scenario, Rediffmail का क्रेज था, वो निकल गया. बाद में Yahoo का क्रेज आया, वो भी निकल गया. Now everyone is being bit by Gmail. Okay, Gmail ही चल रहा है सब दूर. Okay. So what we need to do for reliable software development and how we can maintain the quality assurance, we will see this one in next session. Okay. Do you have any doubt in today's session कि जो भी डिस्कस किया ये आपको पता होगा या नहीं होगा, या probably you heard for the first time and somewhat like that, but do you have any doubt on the topics what we have discussed? Yes or no? Someone say yes, someone say no. No, sir. No, sir. Okay, Animesh, do you have any doubt?